While things are heating up on the political front en route to Rasina Hill with the divide in the NDA now over choosing their presidential pick, back home things are cooling down quite literally, as after months together the rain gods have finally shown mercy that has come as a respite to the ever-scorching Chennai. Hello and welcome to Headlines Now with me Deepthi. Stay with me as I take you through all the stories for today in detail. First coming your way the top headlines. The BJP in Bihar endorses Nitish Kumar on a secular prime ministerial NDA candidate, wants someone like Atal Bihari Vajpayee. There is no consensus on the presidential candidate for NDA as ally Shiv Sena backs Pranab Mukherjee for the top post. Pakistan Supreme Court disqualifies PM Yusuf Raza Gilani after convicting him of contempt of court, tells Zardari to elect a new PM. It's MLA Kartik Tondaiman now after winning the Pudukkottai Assembly seat with a huge margin. Chief Minister slams the councillor for bringing a bad name to the party, says none of their family members should be involved in contracts of the Chennai Corporation. French diplomat accused of raping his own daughter is arrested today. At the G20 meet, Prime Minister Manmohan Singh asserts that the government will take tough measures to revive the economy. Aita agrees with Pes, says it is meaningless to send him with a junior player. News in detail. Divisions within the NDA over the presidential race. While the BJP seems determined to make it a contest, the fault lines within the NDA over the issue are clear. Now, after the JDU, the Shiv Sena has also backed the UPA's nominee. In a major boost to Pranab Mukherjee, the Shiv Sena assured him of its support in his bid to the top constitutional post. The assurance was given to Mukherjee, who called up Sena chief Bal Thackeray and his son Uddhav Thackeray. According to sources, Shiv Sena was understood to be concerned over the approach of NDA to the presidential polls and disappointed about the fact that the alliance has not been able to finalize its candidate. Sources say that the BJP has decided that it will contest against Pranab Mukherjee in the presidential polls. So the big question now is, who will their candidate be? The answer could well be P.A. Sangma. प्रणब मुखर्जी साहब को शिवसेना समर्थन दे रही है और कल देर रात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक बयान जारी किया। बाला साहब ने स्पष्ट कहा ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक फायदे तोटे की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रहित का फैसला है। जिस तरह से राष्ट्रपति पद का चुनाव एक तमाशा बनने जा रहा है और पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे प्रतिष्ठा को, देश की प्रतिष्ठा को, इस पद की गरिमा को साख आ रही है, तो बाला साहब ये तमाशा रोकना चाहिए। हम इस देश का राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं, तो ये सभी बातों को ध्यान में रखकर बाला साहब ने सभी अटकलें खत्म की और प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। Now the NDA ally and Janata Party chief Subramania Swamy has made two key visits, yesterday to meet P.A. Sangma and today he met L.K. Advani, ostensibly to make a case for Mr. Sangma as a presidential choice for the NDA and lending fuel to the speculation that Sangma might be the big name up for discussion at the NDA meet tomorrow. Basically, I wanted to know whether he knows that he would be subject to heavy barrage, whether he would be able to stand up to that and stay firm that he's a candidate. And he said yes, and I've known him for many, many years. So if he says yes to me, he means yes. Otherwise, he says, Swami, I have this problem, that problem. So from that point of view, Sangma will be firm. Sangma is a vigorous campaigner and he has a chance of winning. Now let's have a quick look at the numbers game for Pranab Mukherjee. With the UPA minus Mamta Banerjee support, it is 38% of vote in Pranab's favour. And with the BSP and SP support, Pranab will pull in 10% of the votes. Other smaller parties are likely to gather 6%. So in all, Pranab has the upper hand, gathering 54% of the votes to share to become India's next president. Not to forget, support from the left will increase UPA's vote share by 5%. Now looking at the number game for Sangma, the whole of NDA's vote share will come up to 27.7%. Sangma also has support pouring in from the BJD and the AIADMK, which increases his vote bank by an additional 6%. Now on the flip side, the Shiv Sena and the JDU have withdrawn support from the NDA, which brings down their share of votes to 23%.
Now, if Mamta decides to pitch in support for Sangma, then it adds an additional 4%, which on the whole brings up Sangma's support to 33%. On to other news now. The NDA seems to be split wide open, not just on presidential nominee, but now even on the Prime Ministerial candidate. Bihar Deputy Chief Minister and BJP leader Sushil Modi has endorsed Nitish Kumar's line on the NDA Prime Ministerial candidate, saying that the coalition's leader should be acceptable to all. Earlier, Nitish Kumar, one of the key allies of the BJP, taking a dig at Narendra Modi, had said that PM candidates should have secular credentials. And this is what the Bihar Chief Minister had told the BJP. He said that the party must name its Prime Ministerial candidate well before the 2014 general elections. The electorate should know who they are voting for and who will lead the country. The NDA should have a leader who can feel for the underdeveloped states like Bihar. Clearly hinting at Narendra Modi, Nitish Kumar said that the leader of the coalition should have secular credentials. And when questioned if Modi is barred from Bihar, the Bihar CM said the BJP has capable leaders in Bihar to lead the alliance's campaign. बीजेपी जब भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करेगा तो सहयोगी दलों की भावनाओं का ख्याल रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। नंबर 1। दूसरा, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री का जो भी उम्मीदवार हो वो अटल जी जैसा उदार छवि का व्यक्ति होना चाहिए और जिसको समाज के सभी वर्गों का जो स्वीकार्य हो, इस प्रकार का नाम होना चाहिए। बिहार में कोई गठबंधन खतरे में नहीं है और बहुत मजबूती के साथ बिहार में गठबंधन चल रहा है और आगे भी गठबंधन चलता रहेगा। Politicians Salman Khurshid and Lalu Prasad Yadav give mixed opinion over the remark made by Nitish Kumar. देखिए, जो भी पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, हुकूमत बनती है, सेंटर में सरकार बनती है, उनकी जिम्मेदारी पूरे मुल्क की है, पूरे देश की है। और उसमें ये कहना डेवलपमेंट जो डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में सोचें, जो डेवलप्ड हैं उनके बारे में ना सोचें, तो फिर वही होगा कि जो मदद कर सकता है उसको कमजोर होने दें, जिसको मदद चाहिए है तो उसको मदद कैसे मिलेगी। एक बैलेंस्ड और संतुलित अप्रोच की आवश्यकता है। वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। आफ्टर ऑल, रिसोर्सेज कम फ्रॉम वेयर? रिसोर्सेज कम फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट्स। नीतीश कुमार जो बोले हैं, पहले नीतीश कुमार ही बतावे ना कि ये सेकुलर है, कि इसके नेता सेकुलर है। एनडीए में बीजेपी के कौन सेकुलर है? इस देश में कौन बोलेगा कि बीजेपी वाला लोग सेकुलर है? और इसलिए इनके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि सेकुलर छवि को मतलब उनका इशारा है नरेंद्र मोदी के ना इसमें से खोई है। लगता है कि अभी कैंडिडेट बने हुए हैं एनडीए में, तो ये बीजेपी में कौन सेकुलर है? नरेंद्र मोदी तो जग जाहिर है ही है, उसके बाद से अडवाणी जी या जितना भी है बीजेपी का, तो इन लोगों का सेकुलर मतलब है क्या? मतलब स्टेटस नाशक करता है नीतीश कुमार भाई। Meanwhile, former Chief Minister of Gujarat, Keshubhai Patel, who has been openly attending rallies of dissident BJP leaders, will meet senior party leaders in Delhi to raise a pitch of his campaign against Narendra Modi. The decision to visit Delhi came after a meeting of an anti-Modi faction at Mr. Patel's residence in Gandhinagar last evening. Mr. Patel and other BJP leaders, including those who left the party, have started a campaign against Mr. Modi in the election year. Over to news from the state now. Amir has won the FEFC election by 7 votes opposite Visu. He will now act as the president of the union for the term 2012 to 2014. After winning the election, he said that he will continue to fight for the well-being of the employees of the union. ஊதிய குழு தலைவராக இருந்தால் அந்த ஊதிய உயர்வு சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தை நின்று போனதற்கு இந்த எலெக்ஷன் காரணம் கிடையாது. தயாரிப்பாளர் சங்கம் இரண்டாக இருப்பதால் யாருடன் பேசுவது என்பது ஒரு தெளிவில்லாமல் இருக்குது. கோர்ட்டு வந்து எஸ்ஏஜி சாருக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது. லேபர் கமிஷன் வந்து அட்டா கமிட்டியோட பேச சொன்னது. இப்போ லேபர் கமிஷன் என்ன முடிவெடுக்குது, தொழிலாளர் நல அமைச்சகம் என்ன முடிவெடுக்குதோ அந்த முடிவுக்கு பெப்சி நிச்சயமாக கட்டுப்படும். பெப்சி என்ற பெயர் வந்து குக்கிராமம் வரைக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கு. நாட்டில் எவ்வளவோ தொழிற்சங்கங்கள் இருந்தாலும் பெப்சி என்ற வார்த்தை மட்டும், இந்த தொழிற்சங்கம் மட்டும் குக்கிராமம் வரைக்கும் போயிருக்கு.
ஆனால் இந்த தொழிலாளிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வாழ்வு உயர்ந்திருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஒரு படப்பிடிப்பு தளத்தில் வந்து ஒரு தொழிலாளி மரணிச்சுட்டு ஆனால் அவனுக்கான ஒன்றுமே கிடையாது, அது அன்றைக்கி பேட்டாவோட முடிஞ்சு போயிடுது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு, ஆயுள் காப்பீடும் அதே மாதிரி ஓய்வூதியமும் அரசுடன் பேசி கொண்டு வரணும். அதுதான் இதுதான் பெரிய தலையாய பிரச்சனை. இதை செஞ்சாலே போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன். அதற்கப்புறம் இவர்களுக்கான மருத்துவமனை ஒரு திட்டம் இருக்குது, நீண்ட கால திட்டமாக இருக்குது. அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமோ அதை செயல்படுத்துவோம். Karthik Tondaiman of the AIADMK, who won the Pudukkottai Assembly seat with a huge margin today, took oath as a member of the Tamil Nadu Assembly. Speaker D. Jayakumar administered the oath of office and secrecy to Tondaiman, who secured 1,01,998 votes, defeating his nearest rival Zakir Hussain of DMDK by 71,498 votes in the June 12th by-poll. The Chief Minister inaugurated civic infrastructure projects in the city via video conferencing. The projects include the Vilivakam subway, bridges in Mehta Nagar and Indra Nagar, a commercial complex in Perungudi and school buildings. Later in the day, during the Corporation Council meet that was held at PT Tyagaraja Auditorium, and 169 councillors were present for the same, Chief Minister Jayalalitha has warned the councillors for bringing a bad name to the party because of their misdeeds, and has told that no member of the councillor's family should be involved in contracts of the Chennai Corporation. We'll move to a short break now. More news and updates on the other side. Stay with us.